आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो है IIM अहमदाबाद के बारे में। और आज जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अभीन कक्कड़, उन्होंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। उन्होंने अपनी MBA IIM अहमदाबाद से करी है और बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में बता रखा है, तो वो आपको पॉडकास्ट के दौरान पता चलेगा। और IIM अहमदाबाद आप खुद फील कर रहे होगे कि हाँ, IIM अहमदाबाद की लाइफ ऐसी होती है। हमने उसमें कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट, हॉस्टल लाइफ, सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए IIM अहमदाबाद के बारे में, जो एक एस्पिरेंट फील करता है। आप जो फील करोगे अगर आप IIM अहमदाबाद जाओगे तो वो सब कुछ बता रखा है, रेड ब्रिक कैंपसेस एंड एवरीथिंग यार। तो आई होप सो आपको मजा आएगा। एंड इस पॉडकास्ट में हमने कैट एग्जाम और उसका इंटरव्यू हमने नहीं डिस्कस कर रखा क्योंकि पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो गया था। वो एक दूसरी वीडियो आ रही होगी, बट इसमें हमने यही चीज डिस्कस कर रखी है। एंड IIM अहमदाबाद के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, सो प्लीज देखना और आपको IIM अहमदाबाद की एक फील आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। Abhin Kakkad bhaiya, welcome to Harshit Luthra's channel. Thank you so much for coming. And in this podcast, we will discuss about IIM Ahemdabad की जो आपकी जर्नी थी एंड बहुत सारी चीजें IIM अहमदाबाद से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। उसके बाद सबसे पहले मेरे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं कि हु इज अभिन कक्कड़, तो मेरे लिए भी आसानी होगी और व्यूअर्स के लिए भी आसानी होगी, तो प्लीज बता दो थोड़ा सा। श्योर श्योर। तो as Harshit very well mentioned, my name is Abhin Kakkad. I hail from Ahmedabad, here or in the vicinity of this area. I graduated from DICT Gandhinagar, which is 20 kilometers away from Ahmedabad, in the field of ICT with minors in computational science in 2019. And udhar se directly I went to IIM Ahmedabad for pursuing my MBA. Unique journey, I would say, because GEM fresher. GEM is basically a general engineering male fresher. ये उस टाइम पे ऐसा था कि देयर वाज ऐसा कोई नहीं था जिसने मुझे एक बार ऐसा नहीं बोला है कि जेम फ्रेशर को IIM अहमदाबाद मिलना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक टिपिकल प्रोफाइल है। बहुत कम लोग आते हैं इस प्रोफाइल से। एंड थिंग इज नॉन IIT एंड जेम फ्रेशर इज समथिंग यूनिक। अब दिखते हैं प्रोफाइल्स, बट उस टाइम पे इट वाज अ बिट but yeah, so I graduated from IIM Ahmedabad this year 2021, and now I'm associated with the CK Birla Group, and this is about my professional journey so far, short 23-year journey. And uske siwai, if you want to know about myself, then my hobbies are I play table tennis, badminton, I write poetry, and I also write articles on motivation, competitive prep, and productivity skills. तो मैं खुद originating ideas करके, and highly active there now. It was not so active a couple of years back, I would say, क्योंकि ये सारी प्रेप में और एडमिशन प्रोसेस में मैं काफ़ी बिजी था। बट अब तो ऑलमोस्ट एवरी वीक एक आर्टिकल आई ट्राई टू पब्लिश, एंड माय इंटरेस्ट lie in this area itself. I try to inspire people through my stories and through everyone's story. तो ये है कि ओरिजिनेटिंग आइडियाज जो प्लेटफॉर्म है वो इसी आइडियोलॉजी से बना था कि I invited people to talk about their experiences, and udhar se somebody reads those stories and gets inspired by them, then that's a plus for me, because narratives and stories का एक ये खासियत है कि people can easily connect to that. What you is essentially the same thing on a different format, right? तो ये एक था जो 2016 में जब मैंने ये आइडिया सोचा था, उस टाइम पे this format was not very famous. तो उस टाइम was something that I started and बस वो चल गया, तो it's like a side hobby. Apart from that, थोड़ा मतलब in my research interests and the work that I have published so far, so I have a research paper that I have published in the field of econophysics. I am also co-author for chapters in a book on development trajectories. It talks about what nations did for developing and growing themselves. And uske siwai, there are a lot of articles on various forums. The basic ones, Dare to Compete, Inside IIM, LinkedIn pe I publish a lot.
So those are there. And yeah, abhi ek aur research paper in the pipeline. Hopefully in this year we will get some good news. So that's about my work, and my interests lie in multidisciplinary area. When I was in undergraduate, it mainly lied at the intersection of economics, physics, and mathematics, and they are essentially somewhere, or rather, I would say I'm developing myself to play somewhere in the area, which is a combination of marketing, strategy, and technology. So yeah, that's all about me. सो लाइक आपसे ना काफी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे को, एंड हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम आपकी ये जो जर्नी आपने मेरे को बताई, तो उसको हम एक अच्छे लेवल पर डिस्कस करेंगे, आपके रिसर्च पेपर्स, ओरिजिनेटिंग आइडियाज एंड एवरीथिंग, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलेगा यार व्यूअर्स को। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो IIM अहमदाबाद से है, एंड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि लाइक IIM अहमदाबाद ऐसा क्या है जो मतलब नाम सुनते ही लोगों को होता है कि हाँ IIM अहमदाबाद कुछ बड़ी चीज है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो एक बार। सी, एक ये होता है कि द इंस्टीट्यूट स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ, राइट? एक का ब्रांड इमेज होता है, एंड द ब्रांड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. IIM Ahmedabad and Calcutta are two of the oldest IIMs in Indian history or in the management history. And शुरुआत विक्रम साराभाई ने की थी, as we all know. And तब से लेकर एक आइडियोलॉजी है जो IIM अहमदाबाद ने पकड़ रखी है. No matter what, कितने भी स्टूडेंट्स आ जाए, एक आइडियोलॉजी है which is being followed. एक पेडागोजी कहते हैं, जो कि मेथड जो हार्वर्ड से आई है, and all the IIMs have taken this up. So this style of teaching, the value of the professors and the value of the students is all culminated endeavor which adds to the value of the brand. We will talk about this later also, but बहुत ही rigorous process है selection का, and they are trying to take in the top talent that comes in through various different processes, be it the CAT examination, the VAT process, the PI process. तो ये पूरा उससे क्या है, एक जो funnel बनता है of taking in student, it has been envisioned by someone in the beginning, and अभी तक वो funnel it stands strong. So you can think about it कि 60 साल पहले क्या सोचा होगा, and अभी भी this is still working. तो visionary जो थे विक्रम साराभाई और the first director, right? So they have very strong processes in place. Aspect is the rankings. जो rankings होते हैं, those are on an objective scale. तो rankings are based on various aspects, जैसे opportunities क्या मिलती है in terms of placements, in terms of foreign exchange, in terms of research opportunities, in terms of industry exposure, right? तो ये different parameters होते हैं, and all the magazines have a different weightage assigned to each parameter, and accordingly ये rankings published. Every year the top 3 rankings get shuffled. A, B, C से एक top पे होगा, and the other 2 will be at 2 and 3, right? Yeah. तो ये shift होते रहते हैं, but at the end there was a very long period where IIM Ahmedabad was at the top, right? In the Calcutta and Bangalore have also managed to secure the first position, but there was a long time Ahmedabad was at the top. Yeah. And but एक brand image के साथ वो एक first position, it got locked in. So because of that, एक ये है, एक mindset generate हो जाता है कि IIM Ahmedabad is the best and amongst all. But again, यहाँ पे I would like to mention that, see, यहाँ पे कोई competition नहीं है. Although there is a sort of ranking, but there is a peculiarity of each IIM. IIM-A एक खुद का character है. If we think about all the IIMs as a human entity, हर एक की कुछ qualities है, and each certain traits that define them. तो comparison करना
मुश्किल हो जाता है एंड वी कैन नॉट क्लियरली से कि ठीक है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. रैंकिंग्स में ऑब्वियसली समवन हैज टू बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट लाइक मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था हमारे जेई एडवांस एग्जाम के ऊपर, जिसमें हमारे जो गेस्ट थे स्पर्श गुप्ता, उन्होंने बताया था कि लाइक आईआईटी दिल्ली में एक रैट रेस होती है. मतलब वहां पर सारा मतलब बच्चों क्या है कि यार मेरे को तेरे से आगे जाना, मेरे को तेरे से आगे जाना, मेरे को तेरे से आगे जाना. तो लाइक क्या आईआईएम अहमदाबाद का भी बच्चों का यही माइंडसेट है कि मेरे को तेरे से अच्छी जॉब चाहिए, मेरे को तेरे से अच्छी जॉब चाहिए, मेरे को तेरे से अच्छी जॉब चाहिए? कुछ समथिंग ऐसा माइंडसेट है वहां के बच्चों का? देखो यहाँ पे यू आर असाइनिंग द रैट रेस क्वालिटी टू द इंस्टीट्यूशन. समझ रहे हो? रैट रेस इज अ ह्यूमन क्वालिटी, इंस्टीट्यूट गिवन क्वालिटी नहीं है. इंस्टीट्यूट ethics and integrity in you by their process. They cannot instill the behavior of competitiveness in you. वो human psychology में आता है कि I need to be better than someone. Right? तो IIMA में rat race है वैसा मैं नहीं कहूँगा, but obviously some students might have this feeling that they want to do better. And उसमें कुछ गलत नहीं. I vouch for the fact that if there are n number of students in a batch at IIMA, then every one of the n students is doing something that they like in their lives. Right. फिर वो चाहे बैच में गोल्ड मेडल लाना हो या स्पोर्ट्स में बेस्ट प्लेयर बनना हो बैच का, या they want to win different case competitions and be a master at that, or they just want to learn from everyone around them. If a student has sufficient opportunities for himself or herself, and वो मिलता है. What मैं if you had to tell me IIMA क्या देता है तुम्हें, तो एक वर्ड का आंसर है अपॉर्चुनिटी. तो लाइक आपने मुझे बताया था कि आपने DAICT से अपनी इंजीनियरिंग करी है, ICT से, एंड देन आपने MBA के लिए गया, मतलब MBA के लिए आपने IIM अहमदाबाद से करी. तो लाइक अब मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि बीटेक के बाद MBA का क्या आपको स्कोप लगा, या आपने क्यों सोचा मतलब बीटेक से के बाद MBA? लाइक आपने एक बात कही थी कि जेम फ्रेशर तो यूनिक ही मिलते हैं, अब फिर भी मिलने लग गए हैं, बट उस टाइम पर नहीं मिलते थे. तो लाइक उसके बारे में थोड़ा सा बता दो. See, वैसे there is no one reason why any engineer would want to go to do MBA. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. People come to do MBA to progress in their career, to get a fast track, or want to shift from a technical to a managerial role. Post MBA मुझे जो advantages लगे हैं of doing an MBA immediately after my bachelor's, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा. If I had to talk about the time when I was taking a decision to do MBA, उस टाइम पे I had two things in my mind. एक तो as I mentioned, I was always interested in the areas. मेरा जो research भी था, it was in econophysics, mathematical concepts and tools use करता था मैं. But again, the application was in mainstream economics, right? So that was one thing. So उधर I saw an opportunity that application of technology to कोई भी field, it's not necessary to be a good coder only. If you technology, then you can go in any field where the application. एक ये चीज थी. दूसरी ये थी कि जो exposure मुझे DICT में मिला in terms of the type or the type of people I could interact with, I knew that after a time I am going to get bored of coding and sitting in front of although वो नहीं पता था कि कोविड के वजह से almost everyone is going to face the same thing, कि घंटे कंप्यूटर के सामने ही है. But उस टाइम पे I felt that I wanted to have an application oriented job, and that was something that manager usually does. ऐसा दिमाग में तब था. Right? Try to understand that this is the mind of a 19-year-old. ये post MBA वाला दिमाग नहीं है. वो दिख रहा है. बैचलर्स परस्यू करते हुए
वाला दिमाग है ये। और उस टाइम पे ये था कि एमबीए अगर करना है तो दो ऑप्शंस थे, आइदर गो टू द स्टेट्स जीमैट के थ्रू, एंड द सेकंड ऑप्शन वाज टू स्टे इन इंडिया एंड डू इट फ्रॉम एनी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट्स। अब foreign institutes, 99% of the institutes will be asking for a minimum of 2 years of work experience. Right? And as a person, I'm a bit impatient. तो वो तो होने नहीं वाला था. I was not in favor of waiting for 2 years to do that. So I thought, let me give it. Let me see if I can score well here, this year, as in the graduating year. And I started preparing for CAT somewhere after my second year, sometime after my second year. And that फिर वो जर्नी थी, उधर स्टार्ट किया, उसके बाद रुका नहीं हूँ। वो 12-15 महीने का पूरा एक प्रोसेस था, थ्रू फिर एक ही फोकस के साथ काम किया था मैंने। आई वांटेड टू परस्यू एमबीए। अब सी, एक एमबीए का ड्रीम वैसे अगर देखने जाए तो बहुत साल पहले आया था, व्हेन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो इनसाइड IIM अहमदाबाद। आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड। तब एक था कि ये लाइफ जीनी है एक बार, राइट? ओके। उस टाइम पे एक IIM अहमदाबाद का ड्रीम बन गया कि सो एज आई मेंशन, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। वो एक इंस्टीट्यूट था जो मैंने ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार तो देखा ही है, बिकॉज आई लिव 3 किलोमीटर्स फ्रॉम IIM। ओके। तो वो इंस्टीट्यूट, एंड द typical characteristic of that institute is the red bricks. It's the red brick campus. Although there are other red brick campuses, but this is one of the red brick campuses. Red brick campuses के बारे में थोड़ा सा बता। Okay, so जैसे red bricks is basically a type of architecture where there is exposed bricks. उधर जो color है, if you look at any image of IIM Ahmedabad, you will see the Louis Khan Plaza, right? वो पूरा दिखेगा. The whole infrastructure is such that it is exposed bricks, and bricks by default. So IIM Ahmedabad has a red brick infrastructure. FMS has a red brick infrastructure as far as I know. SRCC has a red brick. SRCC, yeah. So थोड़े institutes है which have this kind of an infrastructure, but if you look at IIMs, then IIM Ahmedabad is the brick. तो एक था कि red जाना है, and that was in my 10th. फिर तो obviously 2 साल 11th 12th किया, engineering की, तो 4 साल तक the thought was dormant in my mind, but to decision of giving CAT finally, तो एक ही था कि अहमदाबाद में जाना है। Okay. आई एम अहमदाबाद, फिर बाकी जो होना है होगा, बट एक था कि उससे नीचे गोल नहीं करना है। मतलब आपका एक माइंडसेट मेरे को यहीं से दिख रहा है कि जितना हो सके बड़ा सोचो, फिर उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए जितना तेज भाग सकते हो भागो। There is a quote, if shoot for the moon and you will land up among stars, something of that sort. मेरे को याद नहीं है वो, लाइक अब मेरा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कि लाइक IIM अहमदाबाद में प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम स्ट्रेटेजी, एडमिशन और ये सारी चीजें, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि क्या IIM अहमदाबाद में मतलब किस किस एग्जाम के थ्रू हम वहां पर एडमिशन ले सकते हैं? क्या सिर्फ कैट एग्जाम के थ्रू, या फिर कोई और एग्जाम भी है? जैसे लाइक कईयों के मैं अपना बताऊं, जेई का एग्जाम होता है, उसमें कई बार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के भी अपने एग्जाम होते हैं कि अगर आप जेई नहीं दे पाए तो आप हमारा एग्जाम दे दो। और क्या IIM अहमदाबाद से रिलेटेड भी ऐसा कुछ है, या फिर उनका सिर्फ एक एग्जाम है, कैट के थ्रू एडमिशन होता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। नहीं, सो IIM अहमदाबाद का एडमिशन सिर्फ कैट के थ्रू होता है। For the international students, there is a process through GMAT, but उसकी details सारी नहीं पता है, because that was not the process through which I took admission. So it's a very simple process. अगर देखने जाए तो it's a 3-step process. First is it starts with the CAT examination. उसके बाद score आता है, percentile आता है, फिर bases your 10th 12th graduation marks, your percentile score in CAT, and a few other parameters like your job experience, your I think there are certain quotas as well, जो standard quotas होते हैं वो तो है ही, and so वो सारे के points मिलते हैं। If you go to the IIM site, you will get a point table कि suppose SC के लिए इतने points है, ST के लिए इतने points है,
तो उस हिसाब से you get a points table. It also includes the EWS quota, your because diversity is an important point. तो diversity के points होते हैं. Not only in terms of your gender, but also the type of background that you are coming from. So engineering, commerce, arts, humanities, ये type की जो diversity होती है उसके भी अलग अलग points होते हैं. That's your background, and basis that you get a call. Now the call is for now the interview process is again in two parts. The first part is AWT, analytical writing test, WAT. AWT या WAT सारे IIMs में अलग अलग होता है, but it's basically a written analysis test. And the second part is your personal interview. तो like अब मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जाम होता है फॉर इंजीनियरिंग WBJE करके, तो वहां पर क्या होता है, वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल जेई का एग्जाम, तो वहां पर वेस्ट बंगाल वाले बच्चों की ज्यादा वो होती है, मतलब प्रायोरिटी क्या है कि क्योंकि वहां पर कोटा वेस्ट बंगाल को ज्यादा चलता है. तो लाइक क्या IIM अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा है कि लाइक अहमदाबाद स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज्यादा स्पेशलिटी या कुछ ऐसा समथिंग? See, IIM Ahmedabad is a national level institute, right? So it doesn't really have quotas for Ahmedabad or Gujarat. जो भी है, it's the same process for everyone. Okay. CAT, call, PI, admission. Okay. ये same process. Okay. Beat anyone. Even जो लोग GMAT के थ्रू आते हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, बस उनके लिए CAT की जगह GMAT. The exam changes, process. एक क्वेश्चन ये आता है कि लाइक मेरे को कोई भी एग्जाम होता है लाइक IIT जेईई का, तो बच्चे कोचिंग को प्रेफर ज्यादा करते हैं, तो क्या IIM अहमदाबाद के लिए कोचिंग को प्रेफर करना चाहिए, मतलब कैट एग्जाम के लिए कोचिंग को प्रेफर करो? हाँ, एग्जैक्टली. सो कैट के लिए कोचिंग होता है, एंड सी आई हैव दिस बिलीव दैट कोचिंग कैन गिव यू अ स्ट्रक्चर. पढ़ना खुद ही है, राइट? जो भी मुझे पूछता है कोचिंग में जाओ या ना जाओ, मैं पहले उनको पूछता हूँ कि डू यू वांट टू डू दिस, डू यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस, द मोटिवेशन टू डू दिस. अगर खुद में वो है तो 100% कोचिंग के लिए. अगर मोटिवेशन नहीं है फिर भी कोचिंग के लिए जा रहे हो, कोचिंग पीपल वोंट बी एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन फॉर द कैट एग्जाम. Yeah. And this is an exam where self study is way more important than graduate level examinations. Be it JEE or Gujarat में there is कुछ set, AIEEE जो भी है, right? JEE वो उधर से ज्यादा self study चाहिए. As I mentioned, it's just not the exam. Exam is just the beginning. It's not the end. Yeah. और भी काफी steps है. So motivation, definitely go for a coaching institute. कोई भी coaching institute हो, whatever. Institutes भी है, local institutes भी है, but at the end, it's पढ़ना more खुद ही about पड़ेगा. पढ़ना खुद ही पड़ेगा. Right. क्वेश्चन मेरे फ्रेंड का था कि लाइक डज IIM अहमदाबाद प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, मतलब? हाँ, so IIM Ahmedabad directly भी offer करती है, and there are other organizations as well that provide scholarships to the students studying in IIM Ahmedabad. Right, so there is BG scholarship which I'm aware of. उसके सिवाय I think alumni scholarships होती है कुछ. So all the scholarships yes criteria, and all the scholarships are not open for everyone. कुछ scholarship are restricted to a certain set of people. So once you get admission, उसके बाद scholarships आती है. Before admission scholarships नहीं होती. क्या आपके 10th और 12th के मार्क्स मैटर करते हैं एडमिशन प्रोसेस में? लाइक मेरे को किसी ने कहा था कि अगर आपके मार्क्स क्लैश हो जाते हैं कैट एग्जाम में, तो आपके 10th और 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, कुछ समथिंग लाइक ऐसा? हाँ, ऐसा रूल तो है. I have read it somewhere. You will need to check what's the current status of this rule. वेबसाइट पे सारी डिटेल्स है, बट 10th-12th मार्क्स मैटर इन अ मैनर दैट उसका कुछ वेटेज होता है एडमिशन कॉल के लिए. जो PI का कॉल आना है, इंटरव्यू कॉल जो होता है, तो उसमें 10th and 12th marks are taken into consideration. Every institute has a different weightage given to the 10th and 12th marks, but हाँ,
10th 12th ग्रेजुएशन, उन सबका एक स्पेसिफिक वेटेज तो होता ही है, राइट. एंड सेकेंडली, although marks are not the end all and be all, marks consistent अगर होते हैं तो they show that you have been working consistently over the years. Spikes अगर होते हैं, say 10th में किसी ने 92 लाया है and 12th में that same person is scoring 75, there must be a reason for that. Yeah. Right. So people will want to understand that reason. Yeah. Say for example 10th 12th में 90 plus है दोनों में and suddenly your score drops to sub 5 in your graduation. What does that say? The interviewers will want to understand that. Okay. There can be multiple reasons के sub 5 क्यों आया, right? Maybe some incident in that individual's family, or there might be a specific course because of which he had. So there might be a domino effect कि कुछ हुआ and then after that the scores started falling consistently. So people would want to understand that. Okay. तो लाइक अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे फ्रेंड्स पूछना चाहते हैं और एक रैपिड फायर होगा. तो मतलब मेरे ट्विटर फ्रेंड्स एंड लिंक्डइन एंड आल्सो व्हाट्सएप फ्रेंड्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आपको मतलब कम टाइम में प्लीज आंसर करने पड़ेंगे. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैं एक इंजीनियरिंग टायर 3 के कॉलेज से हूँ, मतलब टायर 3 से इंजीनियरिंग करी है, तो क्या मेरे को IIM अहमदाबाद मिलने में दिक्कतें आएंगी या फिर मेरे को आसानी से मिल जाए? ये रैपिड फायर का क्वेश्चन है ही नहीं. दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट see, you ask the question in a very typical manner. दिक्कत आएगी या आसानी से मिल जाएगा? Neither of this, right? It depends on the various factors. As I mentioned, 10th 12th graduation, CAT score, how does your interview go, ये सबके ऊपर depend करेगा. All I can say is, since you are coming from tier 3, it doesn't mean you have lesser opportunity than say IIT NIT students. How is your campus life at IIM Ahemdabad? See, I am from that batch which spent half their lives on campus, half their lives off campus. So campus life is great, and I have been in hostel for 4 years of my engineering and 1 year of MBA. So definitely happening here life, but you need to be there to experience it. ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा. As yet, does it really provide high placements or not? IIM Ahemdabad. आपके placement reports are audited and published every year. They are available on their website. And take a call for yourself. जो भी है, it's in the public forum. एक last question: is it better if we join it as a fresher or as an experienced worker at IIM Ahemdabad? Both have their pros and cons. I personally found that for myself, freshers, I would go with fresher because I was a fresher. So freshers have an advantage, and that is an advantage of time. Okay. Because let me just elaborate, because अगर इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो people might take it wrongly. But see, the thing is that as a fresher, you have a lot of time to experiment after your MBA. People who come in 4 years of work experience might not have that opportunity. ऐसा नहीं है कि उनको है, but in some cases they might not have the opportunity that 5 साल try किया उसके बाद settle होने का सोच रहे हैं कि इस industry में settle होना है. As freshers, you have the opportunity to get knowledge from different areas, get knowledge of different industries, and take a call because you do not have the pressure of time on you. Yeah. Right. तो वो एक चीज चली जाती है. But at the same time, जो लोग experience के साथ आते हैं, they have a lot of industry knowledge when they are entering their MBA studies. And because of they are able to grasp some things faster than the people who do not have an experience. तो उधर वो एक समझने का जो ability होता है वो थोड़ा उनमें ज़्यादा होता है. But ऐसा नहीं है कि this ability cannot be developed. Time लगता है. You might not be able to connect with few things because you have seen everything from the outside, whereas they have seen the insides of the corporate life. Yeah. But that's a pro on the
people with experience, right? आपकी इंजीनियरिंग करी तो आपने आपकी कोडिंग स्किल्स हेल्प करी आपको आईआईएम अहमदाबाद के लिए या नहीं, थोड़ी बहुत, लाइक इंटरव्यू में या फिर कहीं भी? Coding skills कितना help किया है ऐसा? हाँ. तक तो I haven't coded since I left the ICT, so that's almost 2.5 years. Coding skills nahi, but the logical mind behind any code, Yeah. that helped definitely. Because see, as I mentioned, my area was always the application, so code was just an aspect of my project, a very small aspect. My interest areas always lied on the application side of it. तो मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए हैं या मेरे जितने भी डिस्कशंस हुए हैं किसी के साथ भी, बिफोर and post IIM, during IIM, those are more on how has my project helped someone, or where does the application of my project lie, or what are the results of my project, right? Obviously this help because एक लॉजिकल माइंड डेवलप होता है कोड करते टाइम, एंड सेकेंडली even during your MBA you have to work with Excel, and Excel does require a few codes, although people do not call it coding, but if you are well versed with the coding lingo then it's easier for you. Yeah. अगर आपको आईआईएम अहमदाबाद ना मिले तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, क्या कॉर्पोरेट चेंजेस आते हैं, आप वो बता दो थोड़ा सा. The question is कि अगर IIM अहमदाबाद ना होता तो how would my life have changed, right? Yeah. So this is a question which I haven't thought about really, because see, जो वो moment था जब IIM अहमदाबाद convert हुआ, that moment was a surprise actually. So ऐसा था कि expected है IIMA का result आज, but 4 बजे तक, and I was actually giving interview on that day. I was in Mumbai giving IIM Indore interview. My mother had accompanied me on for that particular, and 4 बज गए, इंटरव्यू खत्म हुआ मेरा, अभी तक तो कोई रिजल्ट्स नहीं है. मैंने जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आया रिजल्ट. मम्मी ने बोला कि कुछ मैसेज तो है नहीं, फोन तो आज तो नहीं आएगा. एंड तो फिर हम लोग वी वर गोइंग बैक टू द प्लेस वेयर वी वर स्टेइंग, एंड ट्रेन से जैसे ही उतरा, स्टेशन आया और मैंने एक पैर नीचे रखा, एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि IIM रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड. एक पैर ट्रेन है, एक पैर नीचे है, एंड मैं उधर फ्री. मुंबई लोकल में ये बहुत ही रिस्की है, बट अच्छा था. दैट वाज द लास्ट स्टेशन फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेन. स्टेशन पे उतरने के बाद मैंने लॉग इन किया, एंड द फर्स्ट वर्ड रेड कांग्रेचुलेशंस. वो मोमेंट जो डिफाइन हुई है, वो मोमेंट के बाद ये सोचना पॉसिबल ही नहीं था कि IIM अहमदाबाद नहीं होता तो क्या होता. That moment itself is very fresh, and अभी भी अगर देखता हूँ तो it's just 2 years, 2 साल ही हुए अभी तक वो मोमेंट को. तो अभी तो आई थिंक 5-6 साल के बाद आएगा ये क्वेश्चन कि यार IIM अहमदाबाद नहीं हुआ तो क्या. तो लाइक आपको आईआईएम अहमदाबाद मिलने के बाद आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए, मतलब फैमिली के अगर बता दो थोड़ा सा, और फिर उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड. जब ये तो कि लाइक आईआईएम अहमदाबाद आपको मिल चुका है, ठीक है, तो उसके बाद चेंजेस, जैसे DICT से आपने पास आउट किया एंड देन फिर आईआईएम अहमदाबाद शिफ्ट किया, तो उसके बारे में. सी, एज आई मेंशन्ड, एक अपॉर्चुनिटीज हो गया जो IIM अहमदाबाद ने, सो दैट इज वन चेंज. कि okay, coming from DICT going to IIM Ahmedabad as a GEM fresher, the type of opportunities that's one thing. Secondly, when you study at any IIM for that matter, specifically IIM Ahmedabad, you learn the value of time. खुद का time, दूसरों का time, right? Because IIMs do not believe in 8:45 AM. They believe in 8:15, 8:44, 59. Okay. हमारे सब कभी भी 12 रात को 12 बजे नहीं होते थे, 11:59, 59 पे होते थे. तो उधर एक एक सेकंड का पता चलता है. एंड ऑल्दो ये ओवर द पीरियड शायद से लोग बोलते हैं कि यार क्या नेसेसरी स्ट्रेस था हमारे ऊपर के इतना टाइम फॉलो करना पड़ा.
but this is something that an institute instills in you. As I mentioned, एक integrity और ethics की बात की थी हमने आगे के, that is something that an institute or time management and value of time is something IIM-A gives you. Okay. So that is one another change. Secondly, see, ये चीज मुझे मेरे एक मेंटर ने बोली थी when I had secured admission in IIM-A कि बेटा बाहर आते रहना, क्योंकि अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया बहुत अलग है. So once you are inside IIM-A and once you come outside of it, there is a difference, because that's a closed system where you learn through your mistakes and you learn a lot. The whole aspect of 2 years is to learn as much as possible, to make as many mistakes as possible, because as soon as you come out, you enter the corporate. कर सकते हो, but साथ में risk बहुत है. मेरे को एक क्वेश्चन था कि हाउ यू ग्रो योरसेल्फ इन IIM अहमदाबाद, बट जब आपने ये सारी बातें बताई ना, तो मेरा ये डाउट क्लियर हो चुका कि आपने अपने आप को, या एक पर्सन अगर IIM अहमदाबाद में, तो उसको सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ कैसे कर सकते हो, और वो आपने बता दिया. तो मतलब आपने एक ही तीर से 2 शिकार कर दिए. एंड आपके बारे में थोड़ा पूछते हैं कि आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में क्या है, थोड़ा सा आप क्या करना चाहते हो. फ्यूचर गोल्स में रटाया आंसर तो मैं दे दूंगा कि बार बोल चुका हूँ ये आंसर, बट ये सच भी है. So as I mentioned, the goal is to stay in the intersection of marketing strategy and technology, and try to move up and within the organization, outside the organization as an individual. So that's the goal. And future का, see again, as I mentioned, जो interview process के बारे में मैंने बताया था, that it starts with introspection. Future में क्या करना है, that introspection आगे के 5 साल का I know, but उसके beyond that introspection now. मैं आपको एक रिसेंट स्टोरी शेयर करता हूँ कि लाइक मैं विवेक बिंद्रा सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वो सुन रहा था. तो वो क्या करते हैं कि लाइक अगर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला MBA करने के लिए, तो वो कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. तो क्या मेरे को वो कोर्सेज प्रेफर करने चाहिए, या फिर मेरे को कोई भी अगर एक कॉलेज मिल रहा है वहां से मैं MBA करूँ? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे को एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मैं MBA करूँ क्या नहीं? यार, so it is a very subjective term. समझ रहे हो? From a person to person, the definition of अच्छा college is going to change. Yeah. अगर यहाँ पर अच्छे कॉलेज को मैं वो कर दूं, तो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पर अच्छा पैकेज लग जाता है, क्योंकि हमारा जो वो होता है सबको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है. तो इसी को अगर मैं रिसेंबल कर दूं कि अच्छा कॉलेज इन द सेंस गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पर एक अच्छा पैकेज मिल जाता हो, जहाँ पर जिनकी प्लेसमेंट अच्छी हो, कैंपस वाइज अच्छा हो, सारा. See, you really cannot define an MBA course by just the placements, right? Although that is something which has become the beacon, or sorry, something on which the quality of a course is measured, but that's not how it is supposed to be. The goal should be कि अगर मैं XYZ कॉलेज में जा रहा हूँ, तो मुझे उधर किस टाइप के पीयर्स मिलेंगे, किस टाइप प्रोफेसर्स है उधर, नेटवर्क कितने अपॉर्चुनिटी, what is the alumni strength or the alumni network of this particular institute, what are the type of industry associations that this institute has, what about my future aspects in terms of research if I want to do it, what, right? So ये सारी चीजें. उसके सिवाय campus, again, if you want to go there, then campus किस टाइप का है, what are the facilities available, and facilities available मतलब 5-star होटल नहीं चाहिए. जो कैंपस है उसमें मैं कंफर्टेबली पढ़ पाऊंगा या नहीं, does the campus provide that minimum जो requirement है वो, right?
तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। एंड सी कैंपस की जब बात आती है ना, तब बहुत सारे लोगों को घर जैसा कैंपस चाहिए, वो आई डाउट कहीं पे भी मिलता हो, एडजस्ट तो करना ही पड़ता या है। एंड living in a hostel or living in a campus is all about getting out of your comfort zone and trying to adjust with whatever you have and develop within those particular boundaries, constraints, right? I That's think someone needs to sacrifice if they something want. मैंने एक हाँ, कोट पढ़ा था definitely. कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सेक्रीफाइस हो जाएगा जो आपको चाहिए। 100%. तो campus is another aspect. दूसरा the type of finally it comes to placements obviously. तो वो भी देख लो. But see, placement reports and results are difficult to believe these days. So I'm really not sure कि placement reports का जो reporting हो रहा है, placement figures का जो reporting हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है. There are a lot of discrepancies, but you can just go with the published information that. Okay, so ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? वो ये क्वेश्चन है कि आपका क्या व्यू है और क्या आप एक टिप देना चाहोगे हमारी जो जेन Z जनरेशन है, यानी कि 6 to 24 जो अब की जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन, उनको ऐसा क्या मतलब एक मोटिवेशन या कुछ क्या देना चाहोगे जेन Z जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बस? ये चीज मैं बहुत पहले से सुनता आया हूँ from my parents, and it's something I followed and I also tell to it. So be sincere but not serious. So that is something that I always people, right? People as in who are preparing for CAT or want to take admission into any college, and it applies to anyone who's going to sit for any kind of competitive examination. So yeah, that's it. So सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई, आपने काफी कुछ बताया कैट एग्जाम्स एंड IIM अहमदाबाद की काफी लाइफ आपने अपनी शेयर करी। IIM अहमदाबाद सारा कुछ मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच और आने के लिए थैंक यू सो मच। आज Thanks की for having me on. And I hope you are successful in this endeavor of yours. थैंक यू भाई एंड मेरे को काफी कुछ सीखने मिलेगा और आपकी कॉन्वर्सेशन मैंने काफी कुछ सीखा और आई होप आपको भी काफी कुछ बताने में मजा आया होगा। तो हाँ, after I went live for a recording after a long time. So good to be back. And yeah, hopefully future में भी collaborate करेंगे वापस. या मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, तो जरूर आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे आप किसी ना किसी टॉपिक पर जरूर। थैंक यू सो मच।